Hello everyone. Welcome to Leading the Fit Life. I'm in conversation today with Dr. Amir Sanghvi, MS Orthopedic, a surgeon consulting at KD Hospital in Ahmedabad. I'm Meghasi Bhatt. I want to, before I start, I would just like to share that not only is Dr. Amir Sanghvi an orthopedic surgeon, he is also a regular runner, and as well as being a swimmer, and he does yoga as well. So this is why we especially wanted to talk to him today. That since he is a runner and since he is himself into fitness, what advice would he give aspiring runners, regular runners, or runners who have been injured and who want to come back? Okay. So no. Okay, I'm sorry. I'm correcting myself here. This is not just about running. It Ronak and Sunit both say that I am obsessed with running and I cannot think about anything beyond running. Okay, but let us keep this about fitness. Absolutely. Sports. Yes. So, what type of athletes come to you? Uh, I think recently, last 10 to 12 years, I think a lot of sports and with the Modi government pushing towards the sports, a lot of awareness about the sports activities started. And if you see the young generation, आजकल बहुत अलग-अलग sports में track and field है, football, cricket. Cricket is obviously our national sport, apart from hockey. But the commonest thing what we see is track and field is running. There is the football with the young kids around 20 years. Cricket injuries are very common, and other sports like tennis and badminton they come. But most commonly are the basically running related or it is the football related. So, what are the worst sports injuries? In which sports are the injuries the worst? If we consider football injuries, they are quite bad because in normally football injuries there is a twisting injuries of the knee joints, and in most of the cases in the football injuries we see the ligament जो बोलते हैं ACL ligament है वो complete tear हो जाता है और meniscal tear भी होने के chances बहुत ज़्यादा रहते हैं. So football injuries we almost see in 50 to 60% cases they land have to be go for surgery part. So that is way we consider it is a surgery of concern, of basically because the kids are very young and they have to go for the surgery. In other injuries like running injuries or walking injuries, if we see, they are the injuries which requires rest, which requires strengthening exercise, which require physiotherapy and some medications. They require surgery to very less extent compared to the football injuries. In the cricket injuries, the most common is the finger injuries because they get fractures of the fingers while catching the ball or something, and they require again in most in 50% cases they require small finger surgeries or maybe conservative only. So these are the injuries which we see on a very routine basis. So, since you are a runner, would you say that you advise patients with a very different perspective Uh, compared to other Absolutely, doctors? because I think I can see myself also as a myself in two personalities. Personality before 2012 when I was not running, and after 2012 when I started running. My perspective about running and my perspective about giving advice to my fellow runners has also changed. रनिंग सच ए स्पोर्ट ऐसा स्पोर्ट है कि जब तक आप खुद नहीं करोगे ना तब वो आप तक पता नहीं चलेगा कि उसका एडवाइस क्या देना है. अदरवाइज तो एक ही एडवाइस रहेगी कि आप रनिंग स्टॉप कर दो. माई पर्सनल फीलिंग आफ्टर आई स्टार्टेड रनिंग 2012 इज नॉट टू स्टॉप रनिंग. जब भी कोई आता है आपके पास रनिंग की कंप्लेन इसके हिसाब से नी पेन होता है या और कोई तकलीफ होती है तो ट्राई टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम with rehab, with the form of stretching, with the help of medicines, and try to bring them back to running. Don't tell stop running because if they are doing running, it is a very good sport and it's definitely going to increase their longevity of the life and again the longevity of the joints also. तो वो बहुत important बात है. I'm feeling very happy because he has brought up the subject of running. So now I can talk about running. Right? Absolutely right because I am also running के बारे में ज़्यादा बात करना मुझे अच्छा लगेगा. Okay, but in general, an athlete with an injury, right? So, what type of preventive measures would you suggest to any athlete? Uh, Again, when we go for any new runners we start or any means intermediate runners we start, तो इंजरी होने के जो रीजंस अपने को देखते हैं ना तो वो इंजरीज में रीजन क्यों देखते हैं तो नंबर वन थिंग is again one thing is when they start running they are not very aware about how to run
कितना रन करना है, कितना स्लो रन करना है, कितना फास्ट रन करना है, उसका कुछ नॉलेज ही नहीं होता है. So the type of footwear they need to wear, the surface they need to run, the amount of cross training, amount of other strengthening exercises, core exercises they need to do, the vitamins they should take regularly. अगर आप देखते हो कि अगर कोई रनर रन करता है अराउंड 40 to 50 kilometers पर वीक करते हैं नॉर्मली, इफ आई एम राइट, राइट. सो इफ अ पर्सन इज रनिंग, इफ यू कंपेयर दैट विद ए नॉर्मल इंडिविजुअल, जो वही एज का दूसरा इंडिविजुअल वो रन नहीं करता है, तो जो रनर्स की रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा है कंपेयर टू द नॉर्मल पर्सन. And if you are not able to catch that deficiency, you are prone to injuries. So ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स है. अगर ये आप मैनेज कर पाओगे तो आपको रनिंग इंजरी होने के चांसेस काफी कम रहेंगे. रनिंग में जो मेजर जो देखते हैं व्हेन वी टॉक टू रनर्स इज द व्हेन रनर्स दे सी द फैलो रनर्स, दिस इज द नेगेटिव एस्पेक्ट व्हाट आई एम टॉकिंग. एंड आई थिंक अपने देखते ही है कि वो दूसरे को देखते वो रनिंग एकदम बढ़ा देते हैं या एकदम पेस बढ़ा देते हैं. तो दिस इज नॉट द थिंग. आइडियली देयर इज अ रूल ऑफ 20%. If you want to increase your running mileage, you increase every month by 20% compared to the previous month. You can increase the pace even by 10 to 20% compared to the previous month. Don't increase the pace all of a sudden, and don't increase the mileage all of a sudden. That is very, very, very important part from the runner perspective. So you yourself are a barefoot runner. Yeah. So do you recommend barefoot running? Uh, Barefoot running, basically, uh, why is barefoot running basically? Uh, when God created us, बराबर, there were no shoes and nothing was there. People used to run barefoot only. तो उसके हिसाब से जो आर्चिस थे, फुट मसल्स थे, उसको अच्छी तरह सेंसेशन मिलता था. उसके हिसाब से दे वर डेवलप वेरी नाइस. नाउ व्हेन यू हैव लॉट ऑफ क्वेश्चनिंग, लॉट ऑफ थिंग्स, they are not going to develop. They will remain as it is because the arches वो कुछ नहीं होना, because the cushion is always there. Second, knee injuries, because when you run barefoot, the load is on ankle, foot and calf muscles. The load is not on the knee joint. The knee is always spared. तो किसी को अगर नी का कुछ प्रॉब्लम है, तो अगर वो बैरफुट रनिंग करते हैं, यानी कि मिनिमलिस्टिक सोल या बैरफुट रनिंग करते हैं, तो आपका नी ऑफलोड हो जाएगा. लेकिन साथ में आपके थोड़ा एंकल, फुट और काफ पे लोड बढ़ेगा, जो 2-3 महीने का ट्रांजिशन फेस रख के अपने को थोड़ा सेट करना पड़ता है. बट इट इज गोइंग टू हेल्प ए लॉट फॉर श्योर. अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द इंडिविजुअलिटी. किसी को अगर वेरी फास्ट रनिंग करना है तो ये दे हैव टू चेंज द थिंग्स, तो उनको शूज लेने पड़ते हैं. स्प्रिंट रनिंग करना है, लॉन्ग डिस्टेंस, but you have to have a balance between it. But if you are okay with the barefoot running, it is a very, very good thing. I personally feel it. Maybe I am more biased towards it. So what surfaces do you recommend for running? Uh, there are different types of surfaces available in our city. And as मैं भी देख रहा हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट का जो प्लान कर रहा है, जैसे आई विल जस्ट टॉक अबाउट अ स्पेसिफिक रोड्स, जैसे सिंधु भवन रोड को पूरा आरसीसी कर दिया है. नाउ सेकंड फेज इज द राजपथ रंगोली रोड. दे आर गोइंग टू मेक इट कंप्लीट आरसीसी. I would suggest no running on RCC road. Absolutely no running. Maybe आपको bypass करने के लिए थोड़ा run करना पड़े, that is good enough. But otherwise, running on a RCC is not good. Running on a tar road is good, not a bad thing, because यहाँ से rebound आता है, तो अपने joints पे load नहीं आता है. You can run, जैसे कि कई क्लब्स है जिसमें अच्छी तरह का जो मिट्टी बोलते हैं उसको एकदम हार्डन मीन्स करा, एकदम हार्ड भी नहीं होती, लेकिन इट इज गुड इनफ टू गिव द क्वेश्चन. मे बी दैट कुछ ट्रैक्स होते हैं जिसमें कुशनिंग अच्छा होता है, दैट इज अ गुड सरफेस टू रन. सो आई थिंक टार रोड इज गुड, वेयर द प्रॉपर इट्स नॉट बी शुड बी लाइक सी बीच में जो सैंड होती है वो रनिंग के लिए अच्छी नहीं है. अगेन वहां पे लोड ज्यादा आएगा, क्योंकि यू हैव टू डू नॉट गिव लॉट ऑफ प्रेशर टू द योर मसल्स टू रन इन दैट सी सैंड. सो प्रॉपर सैंड जिसमें थिकनेस अच्छी है, जिसमें डेंसिटी अच्छी है, दैट आर द गुड सरफेस रन. बट रोड टार रनिंग इज एब्सोल्युटली फाइन. आरसीसी रनिंग इज नो. Treadmill running is also okay, not to worry about. When you're not able to get the tar road or not able to get the proper surfaces, then treadmill running is the second option. That is also fine. But I would clearly say no pavement running, no RCC running. So I was actually going to come to treadmill running, and there are a lot of people who run on the treadmill and they are very happy that they've run a lot, but it's not the same. It's not the same. It's not the same. Definitely puts a bit more load on it, but it is the surface is good enough to run. It gives a rebound, not to worry about it. So what are the most common running injuries that you come across? So because now we are talking specially about the knee joint, because the running injuries are a lot of common, but now let us talk only about running injuries around the knee joint. The commonest, most commonest is the chondromalacia patella, what we'll call as a runner's knee.
व्हाट इज द कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला? इट्स अ टर्म। जो नी ज्वाइंट होता है उसके ऊपर वो पटेला बोन बोलते हैं, जिसको सर्कुलर बोन होता है। उसका पीछे का कार्टिलेज है वो सॉफ्ट हो जाता है या उसमें थोड़ा वेयर ऑफ हो जाता है, एंड दैट इज द रनर्स नी या कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला। तो उससे प्रॉब्लम क्या होता है? तो प्रॉब्लम क्या होता है कि जैसे इफ आई एम सिटिंग ऑन ए चेयर फॉर से अबाउट 30-40 मिनट्स और 1 आवर, एंड इफ आई वांट टू गेट अप आई विल गेट लॉट ऑफ पेन। अगर मैं क्रॉस लेग सिटिंग जमीन पे बैठा हूँ उसके बाद मुझे खड़ा होना है तो अगेन आई विल गेट लॉट ऑफ पेन। If I want to climb down the stair, climb up the stairs, I will not be comfortable. If I am driving and want to get out of the car, तो अगेन वो पेन बढ़ जाएगा। रनिंग में इनिशियल 4 किलोमीटर्स आपको बहुत डिस्कम्फर्ट लगेगा। आफ्टर 3-4 किलोमीटर्स योर नी विल बी लूज एंड यू विल बी फीलिंग मोर कंफर्टेबल। तो ये कॉन्ड्रोमलेशिया है ना, बहुत रनर्स को परेशान करता है। एंड ये होने का रीजन है अगेन द इफ यू आर नॉट डूइंग प्रॉपर क्रॉस ट्रेनिंग, इफ यू आर नॉट डूइंग प्रॉपर स्ट्रेंथनिंग, वो आपको परेशान करना है। तो नंबर वन इज कॉन्ड्रोमलेशिया विच इज द कॉमनेस्ट थिंग। अनदर इज पटेलर टेंडिनाइटिस। वो अगर बहुत पेसी रनिंग करते हैं विदाउट प्रॉपर इंक्रीज इन माइलेज, विदाउट ग्रेजुअल इंक्रीज इन पेस, या डाउनहिल ज़्यादा फास्ट करते हो, या यू आर डूइंग लॉट ऑफ हिल लैंडिंग करते हो, तो उसके हिसाब से भी आपको चांसेस रहते हैं कि आपको पटेलर टेंडिनाइटिस, बेसिकली जो कॉर्डिसेप्स टेंडन पटेला और लास्ट जो इंसेशन आता है तो वहां पे आपको कंटिन्यूस वो पेन रहता है, तो आपको उठने बैठने में भी काफी दिक्कत आती है। थर्ड इज द आईटीबी सिंड्रोम, इलियोटिबल बेंड सिंड्रोम। दिस इज ऑल्सो कॉमनेस्ट इन रनर, और वो तो बहुत बड़ा नाइटमेयर को, वो उसके बाद रनर्स रन ही नहीं कर पाते। उसमें कैसा होता है कि वो रनर रनिंग स्टार्ट करता है और मैक्सिमम 2-3 किलोमीटर बाद ही हैज टू स्टॉप रनिंग, क्योंकि इतना पेन बढ़ जाता है। इलियोटिबल बैंड है ना, जो अपना जो थाई के साइड में से एक मसल जाता है और वो टिबियल टिब्रोसिटी पे आगे अटैच होता है, वहाँ के वहाँ इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है। और नॉर्मली ये होने का रीजन आप समझेंगे ना, तो जैसे रनर्स रन करते हैं तो द रोड सरफेस इज लाइक दिस, कर्व सरफेस होता है। तो वेन एवर दे आर रनिंग ऑन द एज ऑफ द रोड, तो एक पैर ऊंचा रहता है, एक पैर नीचे रहता है। तो जो पैर नीचे रहता है उस पर लोड बढ़ जाता है। तो इसके हिसाब से वो बैंड पे मैक्सिमम लोड आता है और यू गेट इलियोटिबल बैंड सिंड्रोम। तो इफ यू सी लॉट ऑफ रनर्स, आपको भी पता होगा, आप क्यों रन करते हो सेंटर में? आपको पता था ये? नहीं, ये पता नहीं था। My coach told me to run in the center. Center, but for this reason, because while you see all the runners running in the center, because the center पे road level होता है, if you want to run on the edges, then you have to do criss cross running। तो क्या होता है कि समझो कि थोड़ा रनिंग में 200 मीटर्स में ये लेग नीचे रहेगा, ये थोड़ा 200 मीटर्स में दूसरा वाला लेग नीचे रहेगा, तो वो उसको बैलेंसिंग हो जाएगा। सो मोस्ट ऑफ द रनर्स व्हाट यू सीन है, तो कई लोग अपने देखते हैं ना कि कार्स वाले जो आते हैं या पब्लिक, why these runners run on the middle of the road, but they don't understand, because this is the reason, because if they are not running on the side they are going to get ITB syndromes। That is one of the things. Fourth, very very important and very dreadful is the stress fractures, because stress fractures again क्यों होते हैं? One thing is the deficiency issues of vitamin D3, lack of calcium in the diet। Second is the overweight के साथ रन करते हैं तो उसके हिसाब से होता है। Third is the when you increase the distance, increase the pace, where प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती है, मसल स्ट्रांग नहीं होते हैं, तो स्ट्रेस फ्रैक्चर को हील होने में काफी टाइम लगता है। यू हैव टू एब्सोल्युटली स्टॉप रनिंग फॉर सम अमाउंट ऑफ एटलीस्ट फ्यू मंथ्स एंड देन ग्रेजुअली रीस्टार्ट द रनिंग। I myself have got stress fracture on both the knee joints। I have passed through that journey and it's a very painful journey। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप प्रॉपर क्रॉस ट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरी है, स्ट्रेंथनिंग करना ज़रूरी है, डेफिशिएंसी को अच्छी तरह ट्रीट करना ज़रूरी है, और एकदम पेस नहीं बढ़ाना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। दिस विल डेफिनेटली प्रिवेंट द स्ट्रेस फ्रैक्चर्स। अदर इंजरीज आर मेनिस्कल इंजरी, जो नी जॉइंट के बीच में गद्दी होती है, मेनिस्कस बोलते हैं। अगर आपका कार्टिलेज खराब हो गया बिकॉज यू मे बी बिकॉज ऑफ एज रिलेटेड, बिकॉज ऑफ रनिंग इंजरीज, ट्विस्टिंग इंजरीज होता है, तो देन इट इज अ थिंग वेर यू मे रिक्वायर फिजियोथेरेपी, यू मे रिक्वायर एस माइनर सर्जरी इन द फॉर्म ऑफ आर्थ्रोस्कोपी सर्जरी। ACL इंजरी इज वेरी रेयर इन रनर्स। नॉर्मली ACL इंजरी रनर्स में इतना नहीं होता है। इट हैपन्स मे बी इफ यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू डू लॉट ऑफ हिल ट्रेनिंग करते हो, तब होने के चांसेस थोड़े ज्यादा रहते हैं। व्हेन यू गो मोर ऑफ अ डाउनहिल, देन विद द डाउनहिल ट्विस्टिंग इंजरी से ACL होने के चांसेस रहते हैं। दिस आर द कॉमनेस्ट रनिंग इंजरी वी सी। So after a runner has been injured, typically, like what is the advice you give with regard to resuming? He should not be in a haste to restart the running, नंबर वन थिंग। और जो इंजरी हुई इसको हील होने का टाइम देना पड़ेगा।
हील होने के लिए इधर फिजियोथेरेपी है, मेडिसिन है, एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट इज द रेस्ट है. तो फिजियोथेरेपी, मेडिसिन और रेस्ट, and in few cases maybe some surgery is required. With these four protocol, and once you are being treated properly for maybe few days, weeks or months, then you can restart the running. पर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कि आपको उसको इंजरी हील होने के लिए टाइम देना बहुत ही जरूरी है. आई सी लॉट ऑफ रनर्स कमिंग टू मी हैविंग इंजरीज, telling them not to run for few weeks or few months, but after hardly days I can see them running on the road. I also don't tell them anything. It is, but I think if you want to run for many years, you need to respect the injury. If you see any sports person, Jasprit Bumrah, Nadal, if they get injury, they heal proper. अगर वो heal होते उसके बाद ही वो वापस खेलते हैं, वो तुरंत, they miss many tournaments, but they don't play with the injury. But we runners need to understand to respect the injury. That is very important. But you can resume running after an injury. Absolutely. If you get some injury, it is not think you should stop running. You should, and you should have a plan to resume the running only. So since we've been talking so much about nutrition, can you give some special nutritional tips for female runners? Uh, very important. I will especially talk about females from 35 to 50. That is the most important thing. First is the diet. So they should have a, because of the hormonal, and again I will again speak again about it. The peak bone mass level in females at 35 only. After that, their bones are not going to be as strong, which are at the age of 35. Now, if we are not taking proper care of it, and if you are doing running, you might have a lot of injuries. So, आपका calcium diet में लेना है. Maybe if your diet is not providing, then only tablets. And maybe after 45, you need to take calcium preparations because of the postmenopausal osteoporosis and osteopenia also. तो वो इंपॉर्टेंट है कैल्शियम. आयरन इज वेरी इंपॉर्टेंट. फीमेल्स में आयरन डेफिशिएंसी बहुत ही कॉमन होती है, and you can see a lot of females having a weaknesses after running because they have hemoglobin around 10 only, and that is not a very good thing to run with a hemoglobin less or around 10. That is not a good sign. Again, the protein, because the consumption of protein, because being a pure vegetarian, आपका protein consumption level बहुत कम रहता है. And when you do lot of running, there is lot of muscle injury also. तो recovery करने के लिए आपका protein भी diet में अच्छा चाहिए. So that is very important part. So at least in the diet form, calcium, iron and protein, they are most important part. There are some deficiencies of the vitamins, vitamin D3, B12, they have to be taken care of on a regular basis. You should take calcium if and required according to the age, और अगर आपका requirement कैसा है, females को खास करके जरूरत पड़ता है. Magnesium for the energy purpose, magnesium tablets are very nice if you are doing really good amount of physical exercises, तो body के लिए बहुत important है. And while running, you should have proper electrolytes, that is very important. As well as, of course, proper warming up and cooling down. Yeah. That is a very important part. That is a dynamic stretching and static stretching. Whenever you start running, you should do at least 10 to 15 minutes. I said 15 minutes तो कोई possible नहीं है, कोई नहीं करेगा. But at least of 10 minutes of dynamic stretching is good. And after the running, you should do static stretching. See, अगर आप पूरा दिन काम किया है, रात को सो गए हो, और सेकेंड डे व्हेन यू स्टार्ट रनिंग, तो मसल्स इतने स्टिफ होते हैं, तो अगर आपको रनिंग इंजरी होने के चांसेस रहते हैं, तो एटलीस्ट डू सम डायनामिक स्ट्रेचिंग, तो मसल्स थोड़े लूजन आउट हो जाते हैं, तो आपको रनिंग में इंजरी होने के चांसेस कम रहेंगे. तो डायनामिक स्ट्रेचिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बिफोर यू स्टार्ट योर रनिंग टू प्रिवेंट इंजरीज. Yes. So my message to sports people and especially runners: don't let injuries stop you from running. Yes, of course, you need to get the right treatment, but yes, you can definitely be back on the roads. Perfect. Yes. So we've been talking today to Dr. Amir Sangvi, and I'm sorry, but I hope I never come to you as a patient. Absolutely. We only meet on roads. It's been so nice talking to you, but I never want to come to you as a patient. Done. Yes, you're on Leading the Fit Life. I'm Meghasi Bhatt, and behind the camera there is Ronak Shah and Sumit Jadeja. Thank you so much for watching this episode. Thank you.